होगी दुनिया से हतमन ये बातें अब समझ। बदलाव लाने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। पूरा रिश्ते ये पूरा और का है। Sir, you know where these stones are from? किली लगा ले जरा पॉकेट में। ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿರಬೇಕು, ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಸ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗಲೀಜಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಸ ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಕೂಡುದು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರು, ಡಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ರು. ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಡಿಬಿಎಂಪಿ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಏರಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಬೆಂಚ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದು. ನೀವೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಗಲೀಜಿದೆ ಸರ್, ಕಸ ಹಾಕೋದು ನೀವೇ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಕಸ ಎತ್ತಬೇಕು, ಆ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಸ ಇವತ್ತು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ಸುರಿಬಾರ್ದು, ಆಗ್ಬೋದ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ, ಚರ್ಚ್ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. Like this initiatives we have taken up in other parts of the Bangalore also. Okay. The number one is that when this initiative is taken by their elected representative who is there, the leader, to whom the people look forward, when such initiatives come from them, all those people will follow them. Number one is that the cleaning and maintaining, that is the easiest thing that can be done. What is most important is sustaining. Number one is that the mindset change among the people, sustaining this, so that henceforth people should not throw garbage here, and at the same time, instead of throwing here, they should not throw somewhere else. We in BTFP also, we should also identify why people are throwing garbage. Because our autos are not going to each and every house, they are not collecting that. People will not store garbage. They will have somewhere where if the people, BTFP people don't come and collect them, they will throw it somewhere else. So all those things, it is comprehensively, if all of us work together, we can find solutions and it can be sustained. ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಕೂಡ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಗುಡಿಸೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ದು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಅರುಣ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿ,
ನಮ್ಮ ಯೂಸುಫ್ ಅವರಿರಲಿ, ಅಶ್ರಫ್, ಹಾರಿಸ್ ಅವರು, ನದೀಮ್ ಅವರು, ಶಫೀರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಹ್ಯಾಂಡಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಅದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು इट इज अ रेवोल्यूशनरी चेंज जो शिवाजीनगर को मिलने वाला है, तो इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, आपने सही कहा था, क्योंकि रेवोल्यूशन ही चाहिए अगर हमें एसडब्ल्यूएम को इम्प्रूव करना है। और नगर में कोई भी जगह हो, विशेषतः कि शिवाजीनगर जो आपने अभी जिस पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो सपोर्ट हमें एमएलए साहब से मिल रहा है, यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनसे मिल रहा है, वॉलंटियर से मिल रहा है, इसी तरह अगर हम सपोर्ट मेरे जगह कूड़ा इफ वी गेट सच सपोर्ट, बिल्कुल हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और मुहिम बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए। सिटी मार्केट में भी वैसा मूवमेंट हुआ था, उसके बाद मेंटेन नहीं हुआ था। सिटी मार्केट में किया था, फिर रसल मार्केट में थोड़ा शुरू किया था। अब क्या हो रहा है, पूरा डिवीजन को हमने ले लिया। जो 7-8 वार्ड यहाँ पे है, इसमें एक वार्ड से लेके दूसरे वार्ड जहाँ जहाँ भी ब्लैक स्पॉट्स है, डंपिंग क्यों होता है, इसको एनालाइज करके घर घर को हम ऑटोस भेजेंगे। ऑटोस भेजने के बाद पब्लिक से भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो कचरा है वो हमें हैंड ओवर करें। अगर वो समय पे हमें हैंड ओवर करते हैं, जो ये ब्लैक स्पॉट्स पे गिरते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और ऐसे क्लीन अप प्रोग्राम्स अगर हम 1 महीने में एक बार भी करें ना, तो ज्यादा अवेयरनेस होता है। तो इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ एमएलए साहब को, क्योंकि उन्होंने ये मूवमेंट जो स्टार्ट किया है, इससे बीबीएमपी, वॉलंटियर्स, पब्लिक और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हम सब मिलके इसको कर रहे हैं। और सिर्फ गोल ये है कि क्लीन शिवाजीनगर हमारा गोल है। तो इस गोल 100% वी विल सक्सीड एंड ही हैज गिवन अ टाइमलाइन ऑफ अराउंड 4 मंथ्स। मुझे लगता है उससे पहले ही हम इसको अचीव करेंगे। हर औरत और बच्चा, हर बुजुर्ग शिवाजीनगर का ये चाहता था कि हमारा एरिया क्लीन रहे। क्लीन बोलने से नहीं होता, या सिर्फ जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे डालने से या गवर्नमेंट पब्लिक पे डालने से नहीं होता। तो हमने सिर्फ इतना किया है कि हमने एरिया के नौजवानों को, माँ बहनों को चंद वॉलंटियर्स बना के, फिर जो हुकूमत से, गवर्नमेंट से मिशनरी आती है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो सुपरवाइजर होता है, जो ऑटो ड्राइवर होता है, जो पौर कार्मिका हमारे भाई बहन जो काम साफ करते हैं, उनको एक साथ लाया है और हमने अभी उनका कोऑर्डिनेशन करवाया है। और जो हुकूमत से अगर बीबीएमपी से कचरा ठीक से साफ नहीं होता, घर घर तक अब तक कोई आया ही नहीं लेने के लिए, तो वो कंपलसरी हमने किया है। टेक्नोलॉजी डाला है, हर ऑटो में जीपीएस डाला है, ताकि इस वार्ड में, शिवाजीनगर वार्ड में कौन से घर को जाता है, नहीं जाता है, कौन सी गली को जाता है, कलेक्ट करने के लिए नहीं जाता है, ये सब देखने के लिए। और वॉलंटियर्स को हमने एम्पावर किया है, हमने ताकत दी है। अगर नहीं साफ हो रहा तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, कंप्लेंट हम तक आएगा। सर, व्हाट्सएप ग्रुप में जमने के लिए, ज्वाइन होने के लिए क्या प्रोसेस? वॉलंटियर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो और जहाँ जहाँ पे इतना गंदा माहौल बना के रखा था, कचरा फेंका हुआ था, गंदगी फैली हुई थी, जानवर वहाँ जमे हुए थे, वहाँ सब हमने लोकल लोगों की मदद से आज से हमने काम शुरू किया। ऐसे 8-10 जगह हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हम ब्यूटिफाई करेंगे, और वहाँ पे डिजाइनर लाइट्स डालेंगे, बेंचेस डालेंगे, ताकि बच्चे बैठ सकें, खेल सकें। और जहाँ पे थोड़ी जगह है, बच्चों को खेलने की जगह बनाएंगे। तो खूबसूरत बनाने का काम आज और कल हम कर रहे हैं। फिर परसों से, मंडे से 10,000 घर पे शिवाजीनगर के अंदर मैं खुद आऊंगा और हमारी तरफ से एक डस्टबिन गिफ्ट करूंगा। फिर उनसे इल्तिजा करूंगा कि आप कचरा गाड़ी पे डालें, बाहर ना फेंकें। कोई भी बाहर फेंक रहा है तो हम उनको फाइन करेंगे और आगे चलकर उन पर एक्शन होगा। तो ये एक मुहिम है, ये एक दिन का नहीं है, अगले 3-4 महीने कचरे पे काम करेंगे।
पूरे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, होटल वालों की मीटिंग बुलाएंगे, चाय वालों की मीटिंग बुलाएंगे, पान वालों की मीटिंग बुलाएंगे, जो गंदा कर रहे हैं, सड़कों पे फेंक रहे हैं गंदगी, उन सब की मीटिंग बुलाएंगे। बहुत स्ट्रिक्टली मैं इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। सबको साथ लेकर लोगों का एक मूवमेंट बनाएंगे और लोगों को ये ताकत देंगे। कल कोई एमएलए, कल कोई कारपोरेटर, कल कोई इंजीनियर, कल कोई हेल्थ इंस्पेक्टर इंचार्ज नहीं रहेगा। शिवाजी नगर का जो बाकी सफाई का इंचार्ज और कचरे का इंचार्ज यहाँ के लोग रहेंगे। उतना सर क्या कमिटीज बनेंगे एक एरिया? बिल्कुल, कितने लोग बनेंगे? 750 घर के लिए एक कमेटी बनेगी, वहाँ का उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में हेल्पर, क्लीनर, सुपरवाइजर और पौर कार्मिका जो कलेक्टर, जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर, इंजीनियर और मेरे ऑफिस से कोई उस व्हाट्सएप ग्रुप में रहेगा और हम मॉनिटर करेंगे।